Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing fine. Well, considering the prevailing pandemic conditions, it was tough, but we are here again, and hopefully, we will continue our studies. And as we all are new to this medium, before you people might not have worked on LMS, that is the distinct learning approach. So it is a new medium for all of us. We will try to improve whatever discrepancies that lies on your side as well as on my side. So this is a continuous improvement process, and hopefully we will go on improving it. So as far as our lab is concerned, our lab won't be a big deal of like problem to us because it is concerned to computer-based programming, or I can say in simple word that this is a computer-based lab. Other labs might have some issues that have some practical concerns involved in them through some experimentation or whatever. But inshallah, in this lab, we will cover up whatever the questions arise or whatever difficulties you people are facing. First of all, I would like everyone to install Python on their laptops or computers, whatever they are using, so they can practice it meanwhile watching the lectures or the videos. So basically, if you can't or if you don't practice whatever you learn in this, it will be vague. You will not get or gain anything if you think like I can memorize it and use this after few days or a week. Believe me, you won't able to write even a simple scripted program if you don't practice it, because this Python language or any language involves its different syntax or scripts. So if you are not used to it, you won't able to replicate it, or you won't able to design your own logics and implement them into short or larger scale programs. So going on with the lecture, I want you to memorize what we had done so far in our previous classes. In our previous classes, we had discussed the basics of Python, like starting what is Python, why we use it, what were its benefits, and next moving on with the basics, I told you about how can we write basic command in Python. For example, we studied the input command, we studied the print, like, so the input is basically whatever you need the computer to learn from you. You go with the input program, and for output of any command, like you use print. So input, print, then we used assignment functions also. After assignment function is basically the is equal to mark, which you assign some value to a variable and use it further in any equation or in any subprogram later on. So besides assignment function, we also studied strings. What are strings? What are floats? What is a Boolean function? And many other things. So in this lab, I will study about the formatted strings. What are formatted strings? Formatted strings are basically useful in a situation where you want to dynamically generate some text with the variable. So let's say if I have a first name, just a second, first name. Usually I for separating or differentiating different variables from each other, we use underscore in this. So first name, let's say, like if I save it with Salman, and the second name is, or I can use the last name, is
Khalid. Now, if I want to get something like in the output, I want that it should be displayed as Salman. Remember that I have used the square brackets. Khalid is a coder. Now, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें कि फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम में तो हमने जो इंसर्ट किया है, जो इनपुट सलमान एंड खालिद, दे आर विजिबल, but what we can't see that the addition that I have done in this syntax is the brackets, the square brackets and is a coder. वो हमने इनपुट में नहीं दिया था, लेकिन मुझे आउटपुट में ये चाहिए और इसी फॉर्मेट में चाहिए, चूँकि ये सारे के सारा जो है ना ये स्ट्रिंग ही है, ये स्ट्रिंग ही है. हम जो इसमें कोटेशंस में बंद करते हैं, whatever we close in these quotations is basically string. ठीक है, तो the whole sentence or the whole line is a string. So अब मुझे इस तरह का मैसेज चाहिए कि वो आउटपुट विंडो पे एग्जीक्यूट हो जाए. एंड व्हाट इज आउटपुट विंडो? लेट्स से ये जो हमारे पास स्पेस है, ये हमारे पास इंटरप्रेटर है और कमांड राइटर स्पेस है. ठीक है, हम यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, सब सेक्शन और बी सेक्शन, ठीक है, डिफरेंट कमांड्स लिखते हैं. जो हमारे पास आउटपुट विंडो है, इसको हम टर्मिनल विंडो भी कहते हैं और कंसोल जो कंसोल है, ठीक है, हम इसको ये भी कहते हैं. तो if I want on the terminal window this kind of text of the formatted strings, then let's say for instance I need this message equal to सलमान खालिद. अब देखें फर्स्ट मैंने क्या सेव किया था, फर्स्ट नेम, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लिख लें फर्स्ट नेम एंड इन एडिशन. अब concatenation का जो वर्ड मैं यूज करूंगा, concatenation is used to combine two different string and get a resultant out of it. उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं. ठीक है, प्लस. अब जो डिफरेंस है, ये चीज जो आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स ही हैं तो मैं स्ट्रिंग लगाता हूँ इसके साथ एंड आई यूज दिस ब्रैकेट. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डबल वो आ गए, तो मुझे डबल अब फिलहाल इस यहाँ पे नहीं चाहिए. ठीक है, आई क्लोज दिस एंड सेकेंडली आई देन यूज टू राइट लास्ट नेम. ठीक है, लास्ट नेम प्लस what else is left. ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया था, जो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है. ठीक है, एंड इज अ कोडर. ठीक है, तो नाउ इफ आई प्रिंट द मैसेज यू विल सी व्हाट कैन आई गेट ऑन द आउटपुट विंडो. Okay, let me execute it. So here it is, Salman Khalid is a coder. ठीक है, ये आपके पास आ गया. लेकिन what the difference is, what I want you to understand is this approach works well here, but the problem with it is it's harder to visualize files and script as the output. This is where we use formatted string. मतलब है कि आप जो कोडर होगा, ठीक है, वो सारा का सारा इसको विजुअलाइज करेगा. अच्छा, ये इसमें फर्स्ट नेम है, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आएगा. ठीक है, फिर लास्ट नेम कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इसके साथ ये लिखा होगा, तो ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो इसके लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं. तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ईजी है. ठीक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आप सिंपल जो है उसके साथ लिखें. यहाँ पे हमने सारा का सारा लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे आप सिर्फ डालें F. ठीक है, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए आप जो है ना इसकी कोटेशंस डालेंगे. ठीक है, डबल कोट्स भी सिंगल कोट से आप करें पहले. तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास
जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसको हम कर्ली ब्रेसेस को हमने यूज़ करना है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आर बेसिकली यूज हियर एज होल्स, मतलब लूप होल्स हैं कि जो कुछ आपने इंसर्ट करना है अपने प्रीवियस प्रोग्राम से या सब प्रोग्राम से इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो आपने उसको अगर कॉल आउट करना है इन होल्स को फिल करने के लिए, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस फॉर द फर्स्ट नेम आप यूज़ करें यहाँ पे फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। हमारे पास मैसेज क्या था कि सलमान खालिद इज़ a coder, तो फर्स्ट नेम इज सलमान खालिद, सलमान, द सेकेंड नेम इज़ खालिद, ठीक है, खालिद। और वो हमारे पास क्या था, उसमें ब्रैकेट्स में था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको क्लोज कर देता हूँ, इज़ अ कोडर, ठीक है। एंड आई क्लोज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जो कि मैंने कोटेशन से उसको ओपन किया था, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई प्रिंट दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऑन माई टर्मिनल, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि खालिद इज़ नॉट डिफाइंड। ओके ओके, व्हाट आई हैव डन द मिस्टेक इज़ कि अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि डायनामिकली है, ठीक है, आई हैव टू चेंज व्हाटएवर इंसर्टेड इन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम। ओके, देखें अब इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज। देखें सलमान खालिद इज अ कोडर, ये आपके पास ये काफ़ी आसान उससे आ गया। इसमें कोई कंकेटिनेशन हमने नहीं की, कोई प्लस माइनस जो कि वो चीज़ें हमने नहीं की। सिंपल हमने जो है ना लूप होल्स को यूज़ किया, जो कि आपने पैरेंथेसिस के क्षेत्र में यूज़ करना है, ठीक है। लूप होल्स वो पैरेंथेसिस ओपन किए, डाले फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ठीक है। और ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इजी है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग इसको विजुलाइज भी करना चाहे, ठीक है, तो वो कहेगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम, लास्ट नेम, व्हाटएवर इट इज़ अ कोडर। और वो पिछले जो प्रोग्राम जो आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वहाँ से वो चीज़ें उठा के इसमें फीड करेगा और आपको आउटपुट मैसेज टर्मिनल विंडो पे देगा, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। एंड व्हाट next I would like you to learn is about आपने अगर let's say किसी आप ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं आपके पास इंटरनेट पे, वो आप फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसमें चेक किया हो कि कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं तो उन्होंने उसमें लिमिटेशंस लगाई होती हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन इंसर्ट अमाउंट ऑफ 50 लेटर्स इन दिस बॉक्स, ठीक है, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो आपने अपने मैसेज को फिर कंसाइज लिखना होता है कि वो कंसाइज और डिस्क्रिप्टिव और अगला बंदा उसको रीड करे और या उसको इंटरप्रेट करने में या रिजल्ट्स उससे निकालने में आसानी हो, ठीक है। तो चीज़ मतलब लिमिट लगाने पे, तो वो लिमिट कहाँ से लगती है, वो एक बहुत मतलब लेट्स से कि मेरे पास ये कोर्स है, ठीक है, एंड ये कोर्स कौन सा है, मेरे पास पाइथन है, ठीक है, पाइथन फॉर बिगिनर, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए ही एक हम वो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इसको, ठीक है, फॉर बिगिनर्स। अब एक और चलें इसको देखते हैं, फिर उसके बाद वो मैं आपको करता हूँ। Let's say if I want to print how much letters or characters are in this Python for beginners, ठीक है, तो उसके लिए मैं length का वो यूज़ करता हूँ फंक्शन len, ठीक है, लेंथ। एंड उसमें किस चीज़ की लेंथ चाहिए, वो कोर्स की, ठीक है, तो कोर्स का। तो आप इसको प्ले करें एंड यू विल सी दैट देयर आर 20 कैरेक्टर्स, देयर आर 20 लेटर्स प्रेजेंट इन दिस स्मॉल सेंटेंस, ठीक है। दूसरी जो चीज़ वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लेट्स से कि हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इसका मतलब फ़ायदा क्या है, ठीक है। देखें अगर आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी डालते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल देता हूँ, ठीक है, या स्टार्ट में मैं सिंगल से ही लेता हूँ, देखें सिंगल कोट्स। अब अगर आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस डालते हैं, आप कहते हैं पाइथन्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है, लेट्स से वैसे नहीं देखें, तो उसमें आपकी इशू क्या हो जाता है, आप देखें कि आपके पास पाइथन तो स्ट्रिंग्स में आ जाता है, लेकिन वो फिर आगे जो है एस एंड फॉर द बिगिनर्स ये स्ट्रिंग से निकल गया, तो ये जो है ना पाइथन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अगर इस चीज़ को आपने रिमूव करना है, इस इशू को डीबग करना है, तो यू हैव टू यूज़ डबल कोट्स।
देखें इनिशियली मैंने डबल कोट्स लगा दिया और फिर एंड में भी मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, तो इस चक्कर से निकल आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कोई मतलब पूरा एक सेंटेंस फॉर्म या लेटर या एप्लीकेशन या कोई बड़े मतलब 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने एज अ ट्रिपल कोटेशन फिर आपने डालनी है, ठीक है। ये अब ये देखें, ये पूरा एक वो सेंटेंस, इसमें आप जितनी मर्जी लाइंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको फिल करते जाएं, ये आगे जाएगा जब तक एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये उसका मतलब एक यूज़ है। What next I want you guys to learn is about अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमने अब तक सीखा है, ठीक है, फंक्शंस के हवाले से, तो हमने सिंपल या इन अदर वर्ड्स में कहता हूँ जनरल फंक्शन वो देखें, जनरल पर्पस फंक्शंस देखें, जिस तरह के आप देखें कि इससे पहले हमने लेंथ के हवाले से यूज़ किया len, ठीक है, ये भी एक जनरल फंक्शन था। यहाँ पे आप देखें तो आपको को प्रिंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जनरल पर्पस फंक्शन है, इनपुट भी है, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे जनरल पर्पस हैं जिसके मल्टीपल पर्पस। लेकिन एक जो अभी मैं आपको मेथड के हवाले से बता रहा हूँ, मेथड, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली इसके लिए मुझे ये समझाना पड़ेगा कि कोर्स, अब यहाँ पे ये कोर्स जो ये क्या चीज़ है, कोर्स के अंदर क्या चीज़ फीड है, कोर्स के अंदर है कि कोर्स इज इक्वल टू या कोर्स इज असाइंड एज पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब पाइथन फॉर बिगिनर्स क्या है, बेसिकली ये है स्ट्रिंग, ठीक है, इसकी नेचर स्ट्रिंग की है, ठीक है, या फिर अगर मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से कहूँ तो इसकी जो क्लास है, क्लास की जो टाइप है वो है स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो जो आपके पास कोर्स है वो स्ट्रिंग है, तो अगर इस स्ट्रिंग के हवाले से मैं कोई फंक्शंस यहाँ पे फीड करना चाहूँ या किसी फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, क्योंकि वो जर्नल पर्पस नहीं होगा, वो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ अटैच होगा, तो वो अगर मैं करता हूँ तो उसको कहते हैं मेथड, ठीक है। तो आप अगर मैं यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए क्या करूँगा, डॉट डालूंगा, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन फंक्शंस के ओपन हो जाते हैं, ठीक है, कि आपने उसकी अगर कैपिटलाइजेशन करनी है, मतलब अपर केस में लेके जाना है, केस फोल्ड सेंटर में करना है, काउंट करना है, मतलब फॉर्मेटिंग के हवाले से, और जो है ना आपने स्प्लिटिंग करनी है, कोई न्यूमेरिक, मतलब डिफरेंट आप देखें डिफरेंट मेरे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो मैं बेसिक उसमें जाऊँगा, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि हमने एक मतलब अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, सिंपल लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके साथ टाइप करता हूँ अपर, ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स ओपन करके क्लोज कर दिए ताकि किस चीज़ को करना है वो इसको अपर करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखें वो कन्वर्ट हो जाता है पाइथन फॉर बिगिनर्स, या पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में आ गया, ठीक है, अपर केस में। सिमिलरली अगर मैं इसको स्मॉल उसमें करना चाहूँ तो मैं स्मॉल में कर सकता हूँ, प्रिंट, ठीक है, एंड कोर्स यहाँ पे आप लिखें लोअर, ठीक है, एंड यू एग्जीक्यूट दिस, तो आपके पास अपर के लिए भी आ गया और लोअर के लिए भी आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे आप जहन में डालें कि कोर्स मॉडिफाई नहीं हुआ, ठीक है, कोर्स अपना ही है। अगर आप कहते हैं कि प्रिंट, ठीक है, व्हाट इज इन कोर्स, तो वो एज इट इज़ पाइथन फॉर बिगिनर्स ही आएगा अगर आप कोर्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखें ये यहाँ पे देखें जो थर्ड है हमारे पास पाइथन फॉर बिगिनर्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो कोर्स में था वैसे ही आउटपुट पे आया, लेकिन जो डिफरेंट, अगर अपर के लिए उसने डिफरेंट एक वो स्पेस क्रिएट किए, उसके अंदर सेव किए उसको, और लोअर के लिए उसने अलहदा से स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर सेव किए। मत कहने का मतलब ये कि मॉडिफाइड या एडिटेड नहीं है, ये अलहदा से बनाता है, ठीक है, उसको सेव करता है। तो ये आपके पास ये भी एक फॉर्मेटिंग की